Welcome back to the course on Indian polity. I hope you are here after watching the introduction part of this course where we have discussed the entire syllabus and the way we will proceed with this course. Let me tell you that the mode of language would be the English, but the explanation part would be both in English, that is in English as well as in Hindi. I'll be starting from the very basic and I'll try to cover each and every point on Indian polity. From the perspective of the UPSC, that is, we need to focus on the root causes, we need to focus on the background and what could be the better solution on it. And also from the perspective of various state public service exams, that is concerned with the like the small details as well as the factual data. सो I'll be starting from the very scratch और स्टेप बाय स्टेप हम इस कोर्स में प्रोसीड करेंगे ताकि ऐसे व्यूअर्स जिनको इंडियन पॉलिटी का वेरी बिगिनिंग या कुछ पहले से प्रीव्यू या बैकग्राउंड नहीं है दिस कोर्स वुड गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम एज वेल. So in today's video, we are going to talk about the very first and the very important topic of this course, that is the Indian Constitution. And let me give you the highlight of this today's video. We will be talking about the introduction of the Indian Constitution, and we'll start to develop the background, and we will understand the scenario in which the Indian Constitution was framed, and it was framed by the people. Who were those people? How was the Constituent Assembly came into existence, and how what were the composition and all, and that would be the video all about. So without wasting much time, let us directly jump to the video one and start discussing about the Indian Constitution. So yes, on the screen you are viewing the Indian Constitution, and obviously this is the book, a book written by a group of people, which is the member who is the member of the drafting committee. So before going into that, let me tell you that for running of any country, what we need is the rules and regulations. So किसी भी देश को रन करने के लिए नियम कानून बनाने बहुत जरूरी हैं ताकि सारे लोग उसी नियम और कानून के अधीन आकर के काम करें. अदरवाइज देश जो है लोगों से बनता है और बहुत सारे लोग हैं तो सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग है, तो कोई भी किसी भी प्रकार से काम करेगा अनलेस यू डिफाइन सम स्टैंडर्ड सम रूल्स है ना, कि सबको इस चीज को फॉलो करना है. अदरवाइज जिसका जो मर्जी वो करेगा. सो देयर कुड बी लाइक व्हाट वी से एज ए केओस, पूरा केओस हो जाएगा. तो उस वजह से देयर शुड बी सर्टेन रूल्स. ठीक है. अब ये पॉइंट अलग है कि जो रूल्स या रेगुलेशंस या लॉस जो बने वो कितने फेयर है, कितने जस्ट जस्ट है. जस्ट का मतलब कि सब लोगों के लिए बराबर है ना, ये अलग बात. लेकिन रूल्स का होना या लॉस का होना दैट इज मैंडेटरी एट द फर्स्ट हैंड. ठीक है. अगर आपको ध्यान होगा तो आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आए, so they came as a trader, but they changed their role from trading to administrating. तो जब तक वो ट्रेडिंग करते थे तो मुगल जो थे उस वक्त उन्होंने अपने हिसाब से अपना कानून बनाया था कि आपको ट्रेड करने के लिए इतने टैक्स देने पड़ेंगे, है ना. लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उन्होंने अपने नए कानून बनाना शुरू किए, है ना, जिसके अंदर हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट्स है, पिट्स इंडिया एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट्स है और बहुत सारे एक्ट्स है. लेकिन क्यों कानून बनाया? क्योंकि उनको एडमिनिस्टर करना था. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब दिस इज द सेट स्टैंडर्ड, इसी के हिसाब से सारे लोगों को फॉलो करना है. अगर ये मैंने बताया कि इंडियन सिटीजन्स को, मतलब जो यहाँ के नागरिक हैं, उनको 50% टैक्स देना है, तो दे हैव टू अबाइड बाय दैट लॉ. और अगर नहीं अबाइड करेंगे तो देयर वुड बी कॉन्सिक्वेंसेस, मीन्स उनको पनिशमेंट दिया जाएगा. और उसके लिए भी पूरा एक मैकेनिज्म है. सो दिस इज हाउ अ कंट्री इज गवर्न, एडमिनिस्ट्रेशन इज बीइंग डन. अब दूसरी पॉइंट ये आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, आप कितने फेयर तरीके से कर रहे हैं, है ना, कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स ने जो हमारे देश में कुछ कानून ऐसे बनाए जो कि बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी था, और इंडियंस का यही डिमांड ही था हमेशा से, है ना. स्टार्ट हुआ इसी प्रकार, इसी डिमांड से कि भाई डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करो, सबको इक्वली ट्रीट करो. और इंडिया में जो लोग हैं, जो इंडिया के जो लोग हैं, उन पे अगर गवर्न आप कर रहे हो, उन पे अगर आप रूल कर रहे हो, तो किसी रूल के किसी लॉज, जो भी लॉज बना रहे हो या किसी के नियम कानून के अधीन पर आप गवर्न कर रहे हो, तो उस नियम को बनाने में इंडियन का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. मतलब
इंडिया के लोग हैं और उनके लिए आप कानून बना रहे हैं और उनका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ना? तो इसी की लड़ाई चलती रही। दिस वाज दी व्हाट all struggle and regulation was, that we need freedom to make our own laws, to legislate for our own country. सो अगर आप देखेंगे तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, one of the famous act that was passed by the Britishers, Vernacular Press Act, it was passed in 1878. So this was one among the various laws that was passed by the Britishers. And in this act, what it was said कि only the न्यूज़पेपर जो कि इंडियन लैंग्वेज में होंगे उनको रेगुलेट किए जाएंगे। इंडियन लैंग्वेजेस में जो भी न्यूज़पेपर होंगे उनको रेगुलेट किया जाएगा। रेगुलेट का मतलब क्या है कि आप क्या अखबार में छापोगे, उसकी एक कॉपी आपको पहले भेजनी पड़ेगी, एंड दे विल डिसाइड द कंटेंट कि इज इट ओके और नॉट टू बी पब्लिश्ड। मेनली क्यों ये लाया गया? ये लाया गया कि 1878 का एक्ट आपको मालूम है, 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज मेनी ऑफ द हिस्टोरियन सेज, उसके बाद ये एक्ट लाया गया ताकि रेवोल्यूशंस को, नेशनलिज्म को दबाया जा सके, है ना? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई बोल ना सके। और कुछ अगर आर्टिकुलेट हो रहा है, यानी कि कुछ अखबारों में ऐसा आ रहा है जिससे गवर्नमेंट का बैड इमेज लोगों के पास जा रहा है, तो उस चीज को रोका जा सके। तो ऑब्वियसली बात है कि दिस वाज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ व्हाट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो हम आज के मौजूदा दौर में कहते हैं कि हर एक शख्स को अधिकार दिया गया है कि वो अपना अपनी बात को, अपनी विचारधारा को रख सकता है ना? बट दिस एक्ट वाज द क्लियर कट वायलेशन ऑफ दैट, कि मैं सरकार के बारे में क्या सोचता हूँ, सरकार ऑप्रेसिव है या सपोर्टिव है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। लेकिन दिस एक्ट वाज अ क्लियर कट वायलेशन, बट स्टिल दिस एक्ट एग्जिस्टेड। Another act which I could remember of as of this point is the Arms Act of 1878. Under this act, the carrying of the weapon was made illegal for the Indians. कोई इंडियन अगर किसी वेपन के साथ पकड़ा जाए तो दैट इज इलीगल, दैट इज अगेंस्ट द लॉ। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई वेस्टर्न वेस्टर्न का मीन्स जो ब्रिटिश के लोग हैं या इंडियन को छोड़ करके अगर कोई दूसरे शख्स को आप वेपन के साथ पकड़ते हैं तो दैट इज लीगल, दैट इज अलाउड। तो दिस एक्ट वाज आल्सो डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। दिस इज द टू एग्जांपल, देयर वर मेनी मोर एक्ट्स। बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे। तो अब ये कानून, it was made by whom? It was made by the Britishers. So obviously they will favor their people. So these laws were made in favor of the people, but against the Indian. As you can see, Vernacular Press Act regulation was made for the papers which were published in the Indian languages, and the Arms Act, in which the regulations were made for the people, for the Indian people carrying the weapons. बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया, ऑल दीज वर नो लॉन्गर वैलिड। व्हाई? लेट मी टेल यू। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन can be understood as the supreme law of the land. What does this word mean? Supreme law of the land. What is the Indian constitution? It is the supreme law of the land. In single sentence, I can define constitution as it is the supreme law of the land. More about it, like the unitary feature, the federal feature, the characteristics of the Indian constitution, it is the guiding path, all that thing will come later. लेकिन अगर introductory definition मुझे देना हो तो I can say that it is the supreme law of the land. Law of the land means law of the country. अगर we are talking about the Constitution of India, the supreme law of the India. What do you mean by the supreme? Supreme leader, supreme law. What do you mean by it? See, as you can see over here, in the year 2018, the government, there was a section 497 which is related to adultery law. What does this law say? This law said that, and this law was basically under the Indian Penal Code (IPC), and it was a colonial era law. As we know in the history, we will see कि Indian Penal Code कब बना, देश के आजाद होने से पहले किन लोगों ने बनाया था, मकाले कमेटी वगैरह, जो ब्रिटिश के लोग थे, उन्हें नहीं इस कोड को कोडिफाई किया था, है ना, नियम कानून बनाए थे।
तो उस जमाने का एक लॉ था 19 सेक्शन 497 जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया इन द ईयर 2018। व्हाट वाज द रीजन, व्हाट डिड द लॉ सेड, क्या कानून था? ट्रीटेड वुमेन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड। वुमेन जो है एक प्रॉपर्टी है हस्बैंड की। अडल्ट्री, आई होप सबको पता है अडल्ट्री का मतलब क्या है, कि अगर एक मैरिड विमेन किसी दूसरे मैन, वेदर ही इज मैरिड और नॉट मैरिड, have had sex, then that is the known as the adultery। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी पॉइंट बोला गया, पनिश्ड मैन फॉर एडल्ट्री बट नॉट वुमेन। तो इसमें क्या, कि अगर मेन और वुमेन आपस में कंसेंस के साथ भी, मतलब इफ बोथ आर विलिंग, they come into the sexual intercourse and they build a physical relation, and the woman is married, then they committed a crime of adultery, for which, even though both are equally involved, women were not like punished. Only the punishment was given to whom? Only to men. So this is a clear cut, unfair discrimination against men, and also did not treat both the gender equally. Since both are involved in committing a crime and you are only punishing one, the Supreme Court came into picture and he said that, okay, this law is not meeting the criteria laid down in the Constitution. It violates the criteria. What were the criteria? Violates Article 14, equality, Article 21, that is the dignity and personal liberty. Now you have understood कि there in the Constitution वहां पर कुछ क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, ठीक है। अगर कोई भी लॉ आप बना रहे हैं, यू आर फ्री टू मेक एनी लॉ, but that law, if does not meet the criteria laid down in the Constitution, that law will be null and void. That law would be like struck down, would no longer be applicable in this country. Why? Because in this country there is a supreme law, and every law that you pass in this country must abide by the supreme law. That is what called the supreme law. So constitution is a supreme law. Whatever is mentioned in the constitution, you have to keep in mind while you are passing a law. And if you passed a law which is like not fair, which is unjust, so that law will no longer be accepted. It was accepted before there was no constitution, like we have seen that Vernacular Press Act and Arms Act. But now, since India has a constitution of its own, it has the guidelines on which the laws would be made. It has certain criteria. It has given certain responsibilities. It has certain defined certain fundamental rights. It has defined certain legal rights. It has defined certain duties. Directive principle of state policies. Directive principle means the guiding path that is the legislator must keep in mind while they are framing the laws. It is defined and codified all that thing into a single book. Now that book is available freely on the internet. You can download it from there. And let me show you the PDF part of that book, which is available on the like available on the uh, internet, and I hope you are viewing this. So this is the Constitution of India, and this is the part of 2024. You can download the latest version, and you see we say that it violates that law. Adultery, section 497 violates the criteria mentioned in the Constitution, and since it is not in uh, compliance with the criteria mentioned in this Constitution, so that part of the law which is not in compliance would be struck down. So Article 19 and Article 21. So this is the Constitution where we see there are different parts in it. And if you go down, there are different articles. These are the different articles, Article 148, Article 149. This is basically the introduction. The detail of the article is written in this book, but since this is an introduction part, you see, Article 14 is equality before the law, that is, everyone is equal before the law. Article 21 is protection of life and personal liberty. Now, if you go in detail of this articles, you will see there are certain guidelines mentioned.
with respect to each articles. So this we will discuss in entire detail of this entire constitution. What are the different schedules mentioned in it? What are the how many schedules were there originally? What is the preamble? And see, then we start with the Indian Constitution. This is known as the Article number one, and then sub clauses are there, and explanation is there. So we will see that the languages used are too much, like we can say, from the legal point of view. So to make these easier to understand, we will discuss it each and each article in a common man language. Okay. So this is the Constitution. I hope you can, if you are interested, you can download and keep a copy with you, and can refer to it as we proceed with the duration of this course. So let us come back and let us understand. Now we have understood that the constitution is the supreme law of the country. Okay, any laws that the government passes, and for example, it has 10 points, and out of that 10 points, 2 points does not comply with the constitution. And since constitution is the supreme law of the land, every points of your law must be in compliance with the supreme law. And to that extent, the law is not in compliance, will be struck down. Another example, what we see, like we have witnessed, is the electoral bond scheme of 2018, which was struck down in 2024 by the Supreme Court. The reason being, what was the electoral bond scheme? It was a scheme in which the government has made arrangement for the anonymous donation to the political party. You go to the SBI or any branch of SBI, you buy the electoral bonds, and you do not have to, the bank will, you will have to give your details to the bank, but the bank will not be disclosing it. Suppose if you have donated 10 lakhs to some political party, so your name will not become into public that who has donated this amount. Also, other clauses were there, that is, your individual can also donate, a company can donate, a new company can donate, a company which is less than 1 year of 1 year old can also donate. For example, you have lots of black money and you want to donate. Tomorrow you open, just you register a company, you donate all the company to you donate all your money to the political party. Even your company is in loss, you can donate. So all these were provisions of the electoral bond scheme. The Supreme Court came into picture, and why is that the Supreme Court is always coming into the picture? That is also mentioned in the Constitution that if any law is passed by the government which is contradicting the supreme law of the land, then it is the responsibility of the Supreme Court come to take the matter suo moto. Suo moto means to take the matter on its own. Nobody is coming and complaining that, sir, or the honorable court, this is the law that is passed by the government and this violates the criteria of the Constitution. Please, you intervene. The Supreme Court on its own can intervene and can struck down the provisions. So in 2024, it struck down, and why it struck down the electoral bond scheme of 2018, it said that it violates the citizen right to information, which is mentioned under the Constitution under Article 19, and allowed unlimited and anonymous political funding. So at this point, friends, we have understood that the Constitution is the supreme law of the land. It has clearly defined the guidelines, clearly defined the criteria that you have to keep in mind while you are framing the law for the country, law for the land. It has defined the rights of the citizen. It has defined the roles and responsibilities of the legislative body or the government. It has defined the various arms of the government. It has defined the roles and responsibilities of the Supreme Court and the various courts. It has also defined the duties, or we rather say the fundamental duties of the citizen as well. So before we proceed much more detail about the Constitution, let us first understand what was the background in which the Indian Constitution came into existence, what were the conditions, and how did the Constitution was framed. So the story goes back to 1942 with the Cripps Mission, and if you are a little bit, if you have a little bit remembrance of the World War II, you might be knowing that during this time, 1942, World War II was going on, and the British, or we can say the British was from the England,
एंड दे वांटेड द डायर सपोर्ट ऑफ इंडियन, उनको इंडियन के सोल्जर्स की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट थी ताकि उनके तरफ से वॉर में लड़ सके। और इंडियंस जो है 1857 से लेकर के 1942 तक बहुत सारे हमने रेवोल्यूशंस देखे, हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे जहां पर ऑलरेडी इंडियंस जो थे बहुत ही इंफ्यूरिएट हो चुके थे, जहां पर हमने जलियांवाला बाग मैसेकर देखा, चौरा चौरी इंसिडेंट्स देखी, उसके बाद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज देखी। दैट इज द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, वी विल डील इट सेपरेटली समवेयर एल्स। बट बैकग्राउंड यही है कि इंडियंस की डिमांड थी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का रोल हो, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑलवेज जो है थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ बोलते हैं ना, कैरेट एंड द स्टिक वाला पॉलिसी, कुछ कुछ उनको थोड़े थोड़े एक्ट्स में, जो इंडियन काउंसिल एक्ट्स में थोड़ा रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा सा बेनिफिट देती गई ताकि इंडियन गेट्स इन्वॉल्व इन passing the laws for the country. But what did the Indian demand? They demanded the complete independence. So in the 1942 Crisp Mission, why I am discussing this Crisp Mission? Because the first time the word Constituent Assembly, why what is a Constituent Assembly? See, Constitution को frame करने के लिए there must be an assembly, and that is called the Constituent Assembly. And the first time the Constituent Assembly was mentioned in the Crisp Mission of 1942. Although this mission is entirely failed and इसको कचरे के डब्बे में डाल दिया गया, the reason being we will study in the history, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी इसमें, एंड दैट वाज व्हाट द इंडियन डिड नॉट वांटेड, दे वांटेड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड नॉट द डोमिनियन स्टेटस। व्हाट इज द डोमिनियन स्टेटस? Dominion status means the India would be given freedom, but not the complete freedom. It's certain subjects would be under the direct under the administration of the Britishers, such as the foreign affairs, defense, communication, and India will always what will have to will have to obey the crown. That was the dominion status. So India did not wanted that. So it was headed by Sir Stafford Cripps and to secure the Indian cooperation in World War II. But what was the main proposal? Let us have a look on that. First proposal that India would get the dominion status. And what dominion status? When it will get? After the war is over. And then see here, the Constituent Assembly would frame the new constitution. Now you will frame a new constitution if Indians are finding that the laws that the Britishers are passing is unjust, unfair. So you have the authority to define your own constitution, and for that you will there would be a Constituent Assembly. बट ये बातें केवल हवा में बोली गई, ठीक है? हवा में बोली गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी होगी, क्या होगी, उसका कुछ भी डेफिनेशन यहाँ नहीं दिया गया। लेकिन इतना याद रखना है कि फर्स्ट टाइम अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंशन किया गया, तो कब मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को? दैट वाज मेंशन्ड इन द क्रिस्प मिशन ऑफ 1942। अब मिशन फेल हो जाता है बुरी तरीके से, ठीक है? और मिशन फेल हो जाता है तो क्रिस्प मिशन पे कोई बात नहीं करता, क्योंकि ये मिशन जस्ट एक तरीके से बोल सकते हैं कि लालच दे करके इंडियंस को उनका कोऑपरेशन गेन करने की एक टेक्निक थी। इसीलिए उन्होंने जो भी बातें कही हवा में कही, डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है, उसके बाद बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इट वाज नॉट इन डिटेल। सो द नेक्स्ट आफ्टर few years, like after 4 years and so, the cabinet mission आता है। और कैबिनेट मिशन जब आता है तो रिमेम्बर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का हम लोगों को पता है कि बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है अपोजिशन, और ब्रिटिशर्स के पास कोई भी चारा नहीं बचता है कि इंडिया को छोड़कर जाने के लिए। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हो जाती है, लोग जो है अब बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं, है ना? इंडियन जो भी ब्रिटिशर्स आर्मी थे उनको मारने लगते हैं। तो ये सब पूरा केओस होता है, और इंग्लैंड वर्ल्ड वॉर टू में जो बहुत ही डिफेम हो जाता है। और उसके बाद इंग्लैंड को जो है अब इलेक्शंस भी आने वाले होते हैं, तो उसमें अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिया को फ्री करने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं जो हम आगे हिस्ट्री में देखेंगे। लेकिन उसी दौरान जो है एक कैबिनेट मिशन आता है 1946 का, और दिस टाइम दे वे सीरियस अबाउट ट्रांसफर ऑफ द पावर। दे वे सीरियस अबाउट द ट्रांसफर ऑफ द पावर। एंड देन कैबिनेट मिशन के अंदर तीन लोग आते हैं, क्रिप्स मिशन के सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर एंड लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ओके, ये तीन लोग आते हैं और ये बताते हैं क्या इस टाइम जब हिस्ट्री में हम देखेंगे तो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारे की बात चल रही थी। वी विल नॉट गो इन दैट डिटेल, सो दिस पॉइंट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट द प्रपोजल में नो पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट इज सेपरेट टॉपिक। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाला पार्ट हम देखेंगे पार्ट 3। तो कैबिनेट मिशन वाज द मिशन 1946
which delineated, which explained or detailed the Constituent Assembly. See, this is the Constituent Assembly you can see in the picture. And Constituent Assembly बोले कि there would be a Constituent Assembly बनेगी, ठीक है? और Constituent Assembly में अनडिवाइडेड इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी जहां इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग नहीं होंगे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने के बाद इंडिया का बंटवारा हुआ तो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी जहां पर टोटल 389 मेंबर्स होंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शंस फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबलीज होगा और प्रिंसली स्टेट वुड नॉमिनेट देयर रिप्रेजेंटेटिव। Okay, so if in the question it is asked that question constituent assembly was mentioned first time, it was in which act? So that would be the Cripps Mission. And if Cripps Mission is not in the answer option, then there would be the Cabinet Mission. And in fact, Cabinet Mission explained the full-fledged detail of the Constituent Assembly. So let us now understand what is the Constituent Assembly first. See, in the Constituent Assembly means assembly of the people. If we are saying that there should be a Constituent Assembly, the Constituent Assembly means assembly of the people. Now, people, we talk about the people, we are talking about the undivided India, the entire part. Undivided India basically comprises of three major categories of state. What were the three major categories of the state? That way, number one, we can say that the provinces. Okay, provinces. Provinces means those states which are signed the subsidiary alliance, those states which were under direct administration of the British and they were ruled by the provincial governor such as Bengal, Bihar, Assam, Awadh. So these were the provinces. Another way, princely state. Princely state means these states they have accepted the dominance of the British crown, but they were ruled by the ruler. The ruler were not the governor appointed by the Britishers, but the king. He was the king for the namesake, but there was a king. So these were the princely state. Next were the chief commissioner provinces. Chief commissioner provinces. Okay. What were the chief commissioner provinces? Chief commissioner provinces means those provinces were newly created and hence they were under direct control of the British crown. जस्ट आप इसको समझ लो यूनियन टेरिटरी। जैसे यूनियन टेरिटरी अभी डायरेक्टली कंट्रोल अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, सिमिलर टाइप में चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस था व्हिच वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ओके, नाउ इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कब इन्होंने देखेंगे आप कैबिनेट मिशन आता है मार्च में, मार्च 1946। दिस वाज द कैबिनेट मिशन और इसमें बोला गया क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। टोटल कितने मेंबर्स होंगे 389 मेंबर्स। तो 389 मेंबर्स इन 1946 में total provinces, the undivided India were divided into three groups. One were the provinces, another were the princely states, and the third were the chief commissioner provinces. Now, these 389 seats will be divided among these three groups. So, the provinces were given the total of 292 seats. So people in the Constituent Assembly means you are going to make the constitution of the entire country. So people from the entire country should come into the assembly to present their view. यही तो डिमांड था कि भाई इंडिया पे क्या नियम कानून बनेगा वो इंडिया के पीपल रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो इसीलिए पूरे देश के कॉर्नर से असेंबली में लोगों को बुलाया गया। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरी जनता आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है जनता जो है किसी को चुन करके भेजेगी कि भाई हमारे इस एरिया से ये बंदा हमको रिप्रेजेंट करेगा, हम इसको भेज दें, ये हमारे नीड्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो इस तरीके से प्रोविंसेस में थ्रू 292 सीट्स, प्रिंसली स्टेट्स के लिए 93। प्रिंसली स्टेट में कोई इलेक्शंस नहीं होंगे, वहां का राजा ही नॉमिनेट कर देगा जिसको, वो असेंबली में आ जाएगा। और चीफ कमिश्नर प्रोविंस में 4 सीट्स, ठीक है। तो 292 प्लस 93 प्लस 4, ये टोटल कितने होते हैं 389 सीट्स। ये तो सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। अब मैनर ऑफ इलेक्शन कैसे होंगे, तो भाई 93 का तो क्लियर है। 93 को क्या होगा, विल बी नॉमिनेटेड बाय द किंग।
किंग जब नॉमिनेट कर देगा वही आ जाएंगे डायरेक्टली असेंबली में, ठीक है। बाकी 296 के लिए क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे। अब वी आर टॉकिंग अबाउट 1946, रिमेंबर 1946 में इलेक्शंस कैसे होंगे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज था, क्या सारे लोग वोट देते थे, नहीं। यहाँ पर क्या होंगे देखो, जब हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री में हम देखेंगे कि डिफरेंट एक्ट्स आए, तो उसके अंदर प्रोविंसेस के अंदर प्रोविंशियल असेंबलीज बनाई गई, ठीक है। तो हर प्रोविंस के अंदर प्रोविंशियल असेंबलीज थे। और ये 296 जो सीट्स हैं, मान लो किसी प्रोविंस के अंदर 3 सीट्स दिए, किसी के 4 सीट्स दिए, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन कितना ज्यादा है उसके ही प्रोपोर्शन में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो 296 सीट्स जो थे वो प्रोविंशियल असेंबली प्रोविंशियल असेंबली था। हर प्रोविंस का एक प्रोविंशियल असेंबली था, जैसे अभी हमारे पास करंट टाइम पे जो स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह ही प्रोविंशियल असेंबली होता था। उस प्रोविंशियल असेंबली के अंदर लोग वोट करते थे, ठीक है। नॉर्मल पीपल वोट नहीं करती थी। प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जितने भी लोग थे, दे विल वोट फॉर द कैंडिडेट कि कौन जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। Remember, provincial assembly क्या था, for the particular province, and constituent assembly was a body that will make laws for the entire country, that will make the laws for the entire country, okay। तो provincial assembly में से लोगों का इलेक्शन हुआ। What was the manner of election? They were selected directly or indirectly? Indirectly. Indirectly means people do not elected them, they were elected by the representative chosen by the people, okay। So indirect election was held, and through, see, for election there are two techniques that are used in India. One is called the positional proportional proportional representation of vote, proportional representation of votes, proportional representation. Another is called the first past the post, जो पहले विनिंग लाइन को पास कर दिया वो विनर। तो इंडिया में दोनों ही टाइप के इलेक्शंस होते हैं करंट टाइम पे। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला जो इलेक्शन होता है, दैट इज बेसिकली कॉमन, और हम यूज कहाँ करते हैं, लोकसभा और विधानसभा में। हाँ, आई एम गिविंग यू अ लिटिल बैकग्राउंड। लोकसभा और विधानसभा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब क्या होता है, जिस, मान लो कैंडिडेट ए बी और सी है, और वहां पर लोगों ने वोट किया, मान लो 1000 वोट है, तो जिस कैंडिडेट को मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट मिलेगा वही विनर होगा। मान लो इसको मिल गया 10 वोट्स, इसको मिल गया 1 वोट, और इसको मिल गया 0 वोट, है ना। तो किसी भी कैंडिडेट को आप देखो यहाँ पर, किसी भी कैंडिडेट, बाकी जो है ऑलमोस्ट 989 लोगों ने जो है वोटिंग नहीं किया, ठीक है। तो 989 लोगों को वोटिंग नहीं किया, इन लोगों को इंटरेस्ट नहीं था गवर्नमेंट बनाने के लिए कि भाई ABC तीनों में से कोई भी लायक का बंदा नहीं है जिसको वोट किया जाए, तो इन्होंने वोट नहीं किया। नोटा, मान लो अभी तो ये लॉ हो गया ना, नोटा में अगर ज्यादा वोट्स पड़ेंगे तो री इलेक्शंस एंड ऑल दैट। तो मान लो ABC था, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ए विल बी डिक्लेयर्ड एज द विनर। वाई, बिकॉज आउट ऑफ दी ABC ही हैज गॉट द मैक्सिमम वोट, तो जिसको मैक्सिमम वोट मिलेगा वो विनर हो जाएगा। लेकिन यहाँ ड्रॉबैक क्या है कि इवन 989 पीपल डिड नॉट वांटेड ए टू बी their representative, but A is their representative by default. Why? Because of this technique, which is called as the first past the post. Okay, but now it is not the so, because there is none of the above an option is there, and वोटिंग परसेंटेज अगर NOTA पे ज्यादा पड़ेगा तो री इलेक्शन होंगे, ठीक है। बट अभी आप ये समझो फर्स्ट पास द पोस्ट का क्या मतलब हो, व्हाट इज द ड्रॉबैक, ये भी समझ में आ गया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोट का क्या मतलब होता है, मान लो यहाँ पर ABC है, और यहाँ पर तीन तीन सीट्स के लिए ABC खड़े हुए, तीनों पार्टी। अब इवन दो, मान लो कि हमारे पास 100 वोट्स हैं, इसमें से ए को पड़ा 80% वोट, 40% वोट, बी को पड़ा 40% वोट, और सी को पड़ा 20% वोट।
है ना। वोट का शेयर्स कितने कितने वोट पड़े, अब जितना परसेंटेज ऑफ वोट पड़ेगा उतना सीट्स आपको मिलेगा। यू हैव वन 40 सीट्स, इनको 40 सीट्स और इनको 20 सीट्स मिलेंगे। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोट्स का मतलब ये होता है कि जितना प्रोपोर्शन ऑफ वोट आपको मिल रहा है उतने सीट्स आपको मिलेंगे। मतलब अगर आपको 100 में से 10 वोट मिले तो 10 टोटल सीट्स का 10% आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि हर पार्टी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, है ना। ए को भी कुछ सीटें मिल गई, बी को भी कुछ सीटें मिल गई, सी को भी कुछ सीट मिल गई। तो एवरी पार्टी वाज गिवन रिप्रेजेंटेशन, एवरी पार्टी गॉट रिप्रेजेंटेशन। ओके, है ना। तो सबको ही रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। सो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक कॉल्ड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोट। और ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं? कहाँ यूज होता है करेंटली इंडिया में? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को हम ऐसे ही इलेक्ट करते हैं बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोट, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एसटीवी, सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट। सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट का क्या मतलब होता है? सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल समझो ए बी और सी अगर तीन कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले कोटा डिफाइन होगा कि भाई आपको मिनिमम कितने वोट्स चाहिए। मैक्सिमम आपको मिल जाए आप जीत जाएंगे, ऐसा केस नहीं होता है इस केस में। तो इस केस में होता है कि आपको सबसे पहले नंबर ऑफ वोट्स कितने चाहिए वो डिफाइन करना होगा, दैट कोटा, उसको बोलते हैं कोटा ऑफ वोट। तो कोटा कैसे डिफाइन होता है? कोटा इज डिफाइंड एज कि आपके पास टोटल वैलिड वोट कितने हैं, कितने वोटर्स हैं जो वोट करेंगे, भाई टोटल सीट कितना है, कितने सीट्स हैं, 2 सीट्स हैं, 3 सीट्स हैं, प्लस उसमें वन ऐड कर दो, और इसका जो रिजल्ट आया उसमें वन ऐड कर दो, दिस इज द कोटा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा प्रेसिडेंट के सीट के लिए खड़ा हो रहा है और मान लो कि 10 वोटर है वहां पर, तो टोटल वैलिड वोट कितने हो गए? 10। टोटल सीट कितना? ओनली वन प्रेसिडेंट वुड बी देयर, प्लस वन कर दो तो ये कितना हो गया? 5। 5 + 1, ये वाला वन। तो ये टोटल कितने वोट चाहिए? 6 वोट चाहिए। अब अगर ए बी सी, अब यहाँ पर लोग जो है ना, मान लो मैं वोटर हूँ, तीन कैंडिडेट है, मैं एक वोटर हूँ, तो मैं जाकर के वोट करूंगा ए, मेरा फर्स्ट चॉइस, मेरा सेकंड चॉइस, मेरा थर्ड चॉइस, हमको बताना है ना, तीनों कैंडिडेट है तो बताना है। तो मैं बताऊंगा कि मेरा फर्स्ट चॉइस ए है, सेकंड चॉइस सी है और थर्ड चॉइस बी है। तो फर्स्ट चॉइस जितने लोगों ने ए को दिया, अगर वो 6 क्रॉस करता है तो ए विल बी द विनर। और अगर वो 6 क्रॉस नहीं करता है, मान लो 4 रहता है, देन जो लास्ट सबसे कम चॉइस जिसको मिला, मान लो सी को मिला, तो सी का कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा और इसका वोट ट्रांसफर हो जाएगा ए और बी को, मतलब नेक्स्ट चॉइस जो है वो ए और बी को ट्रांसफर हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। So this much detail actually is not required, but since you should know this, so I have explained you. So if winning candidate has extra votes beyond quota, in that case, surplus vote is transferred to the second preferences on their ballot. Transferred have it as a fractional value, मतलब mathematically proportional. That is what we have talked about in the below portion over here. Okay. So coming back to the Constituent Assembly, 1946 में क्या बोले? इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ओके। एंड कैसे इलेक्शन होगा? बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोट। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। डन, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। चलिए नेक्स्ट, 296 सीट्स पे जब वोटिंग हुई, इलेक्शंस हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कुछ रिजल्ट्स भी आएंगे, है ना। व्हाट वुड बी द रिजल्ट? इलेक्शन कब से कब तक हुआ? मार्च, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बुलाने के लिए बोला गया था ना, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इन्होंने बोला कि आप क्या करना है, इलेक्शंस, आपको इलेक्शंस करवाने हैं। कितने सीट्स के लिए? 389 सीट्स में से आप 93 हटा दो, जो बच गए 296 उनके लिए। ठीक है, वो इलेक्शंस हो। 3 महीना प्रिपरेशन में लगा, अप्रैल मई जून, जुलाई से अगस्त, जुलाई से अगस्त 1946 में प्रिपरेशन करने के बाद जुलाई से अगस्त के बीच में इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, इलेक्शंस होते हैं 296 सीट्स पे, और उसके बाद इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो रिजल्ट्स के अंदर बताए जाते हैं कि 296 के अंदर मेनली दो पार्टी थी उसमें, आप सबको पता होगा। वन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अनदर वाज द मुस्लिम लीग। रिमेंबर 1946 का टाइम डिस्कस कर रहे हैं, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द अनडिवाइडेड इंडिया। तो दो मेजर पार्टी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी सीट्स मिलती है? 208। ठीक है। मुस्लिम लीग को कितनी सीट्स मिलती है? 73।
अब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितने हो जाते हैं? 1, 8, 20। सर बाकी की सीट्स, तो ऑब्वियस सी बात है, बाकी के जो 15 सीट्स थे दैट वेर इंडिपेंडेंट, किसी भी पार्टी से नहीं लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े। ठीक है। तो 290 सीट्स का जो रिजल्ट आता है, यू हैव टू रिमेंबर दैट 208 वाज गिवन टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, 73 वाज गिवन टू मुस्लिम लीग, एंड 15 कैंडिडेट वेर इंडिपेंडेंट। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। गुड। अब जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन कौन लोग जाएंगे ये तो फाइनल हो गया कि भाई ये जो जो लोग इलेक्शन जीत के आए हैं वो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो, मैंने बताया था ना कि ऊपर में यहाँ पर कि 93 नॉमिनेटेड होंगे, पर प्रिंसली स्टेट से राजा ने नॉमिनेट ही नहीं किया। इतने आलसी कि भाई नॉमिनेट ही कर दे किसी को कि जाओ नहीं। तो ये तो भाई ये सीट तो खत्म हो गई, वेकेंट हो गई, कोई गया ही नहीं। अब जितने इलेक्शन हो गए उतने की ही बात होगी आगे, है ना। तो 296 में से हमने आउटकम जो आया, रिजल्ट वो ये रहा। 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, डन। अब बोले भाई इलेक्शंस भी हो गए, रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो गए। अब ये फर्स्ट मीटिंग जो होता है, फर्स्ट मीटिंग, अब सब लोग मिलेंगे भाई, सब इलेक्शन जीत चुके हैं, अब मिलेंगे असेंबली में जमा होंगे। देखो यहाँ पर ऊपर पिक्चर में हमने देखा, ऐसे लोग आएंगे भाई, चलो ठीक है, सब लोग चुन करके आ गए, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला जाएगा। तो मीटिंग होगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहला सेशन स्टार्ट होता है, और वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड दैट वाज द डेट वाज 9 दिसंबर 1946। सोचो, मार्च में बोला गया आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, और फास्ट कितना काम हो रहा है देखो, मार्च के बाद 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन का प्रिपरेशन हो गया, जुलाई से अगस्त में इलेक्शन हो गए, सितंबर अक्टूबर नवंबर निकल गया आपका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर करने में, इन सब में। और दिसंबर, क्योंकि अभी तो ईवीएम है, पहले तो बैलेट पेपर पे इलेक्शन होते थे, काउंटिंग करना तो समय लगता था, फिर इलेक्शन भी साइमल्टेनियसली हर जगह एक साथ नहीं होगा, तो इनमें 3 महीने निकल गया। 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग होता है, और इनफैक्ट पहला सेशन भी शुरू होता है, एंड दैट इज बिटवीन द 9 से 23 दिसंबर, ये पहला सेशन होता है। ठीक है, पहला 1946 पहला सेशन। ठीक है, पहला सेशन होता है। सेशंस का मतलब ये होता है कि कोई भी असेंबली जब मिलती है, तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यू चलती ही रहती है, मिलेगी कुछ दिनों के लिए, पॉइंट्स डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, अब लोगों को अपने अपने एरिया में जाके उस चीजों को इम्प्लीमेंट करना होगा, काम करना होगा, लोगों को बताना होगा। क्योंकि इनफैक्ट जो लोग चोजन है, वो किस लिए है कि वो अपने पीपल को रिप्रेजेंट कर सके, तो क्या चल रहा है असेंबली में, क्या प्रपोजल्स है, वो अपने जनता के बीच में जाकर डिस्कस करना है। तो इसलिए सेशंस में काम होते थे। तो पहला सेशन होता है 9 दिसंबर से 23 दिसंबर। अब इस सेशन के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आपको याद रखना है। दिस इज द फर्स्ट सेशन। पहला मीटिंग हमने बताया 9 दिसंबर 1946। ठीक है, और इसी दिन जो है चेयरमैन, अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है तो एक चेयरमैन होगा असेंबली का, तो चेयरमैन चूज किया गया किसको? डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा। ओके, इनको चेयरमैन चूज किया गया। ये क्यों चूज किया गया? कि ये बहुत ही सीनियर थे, सीनियर मेंबर थे, ठीक है ना। उसके बाद 9 दिसंबर के बाद देखेंगे कि यस, 11 दिसंबर का डेट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, 1946। क्यों? क्योंकि इनके बाद डॉक्टर, ये टेम्पररी प्रेस चेयरमैन बने। टेम्पररी का मतलब कुछ दिन के लिए बने, 9 को बने, और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चूज किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चूज किया गया, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बने नए चेयरमैन, और वो कब बनते हैं? 11 दिसंबर 1946 को। ये भी डेट याद रखना है आपको। एक देखिए, फर्स्ट सेशन का पहला मीटिंग होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का 9 दिसंबर 1946, और 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि 2 दिन के बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन चूज किया जाता है, और यही हमारे प्रेसिडेंट भी बनते हैं। दैट इज ऑन दी 24 जनवरी 1950 को पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं। वो विल डिस्कस इट लेटर। उसके बाद आ जाइए 13 दिसंबर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इज 13, अभी पहला ही सेशन चल रहा है ना। 13 दिसंबर 1946, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, दैट वाज पास्ड। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड। ठीक है, और ये अप्रूव कब होता है? तो ये अप्रूव होगा सेकंड सेशन में, वी विल सी। तो ये भी डेट आपको याद रखना है।
13 दिसंबर 1946। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मतलब नॉट पास्ट, इट वाज प्रपोज्ड। कौन प्रपोज किया था? जवाहरलाल नेहरू। प्रपोज्ड बाय जे एल नेहरू। तो पहला सेशन हमने देखा 9 दिसंबर से 23 दिसंबर, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट काम जो है वो देखे। सेकंड सेशन हमारा होता है 28। सेकंड सेशन हमारा होता है, सेकंड सेशन 20 दिसंबर तो खत्म हो गया, अब जनवरी आ गया। 28 से 25 जनवरी 1947। अभी भी इंडिया डिवाइड नहीं हुआ है, स्टिल वी आर अंडर अनडिवाइडेड इंडिया ओनली। 1947। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने पास किया था कब? 13 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है प्रपोज जो किया था, दैट इज पास्ड बाय द असेंबली एंड द डेट इज द 22 जनवरी 1947। तो पहले सेशन में प्रपोज किया गया, और दूसरे सेशन यानी कि 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया बाय द adopted by the assembly. Okay. So before independence, that is till 1947, August 14, when the country was divided, we have total we have 11 sessions of the Constituent Assembly, 11 sessions, and 4 sessions we have before independence and 7 sessions after independence. And for total, it worked for 114 days. The Constituent Assembly functioned for 114 days. When was the last session that was held? Obviously, that was held between 14th to 26th November 1949. And the last day of the Constituent Assembly was when the Constitution was adopted. And that was 26th November 1949. So this was the last day when the Constituent Assembly met. So, why it was the last day when the Constituent Assembly met? I'll explain you in a bit. Let us summarize that the first session, first day when the Constituent Assembly met was 9th of December 1946, and the last was 26th November 1949. And I already told that 4 sessions before independence and 7 sessions after independence. So before, between these, there were some, obviously, the Constituent Assembly had to functions like a parliament, the Constitution as the Parliament of the India, and we will see that in 1947, India become independent. August 1947, precisely 14th and 15th. 14, India get divided. 15, we celebrate India's Independence Day. Okay, so let's see some important points in it, then we will proceed. So, India adopted the Indian flag, and that was adopted before independence. That was the date was 22nd July. Remember the date, 1947. So this was all adopted by the Constituent Assembly. Adopted the national flag, 22nd July 1947. And who designed the national flag? It was designed by a man called as the Bengali Venkaya. Venkaya. Okay. So 22nd July 1947, the Constituent Assembly adopted the national flag. Then we have the 24th January 1950, and here we adopted the national NATI, national song, national anthem as well. Both are different, okay? National anthem, Janagana Mana, national song, the what we call as the uh, Vande Mataram. And also on this day, Dr. Rajendra Prasad elected as elected as president, and he was the first president of India. Okay, so he was also the chairman
We have seen 11th December 1946, he was elected as the chairman of the Constituent Assembly. And 24th January 1950, he was also elected as the first president of the India. Now you see, these were some of the most famous adaptation, or we say the enforcement of the Constituent Assembly. 22nd July 1947, national flag was adopted. 24th January 1950, after independence, national song and national anthem was adopted by the Constituent Assembly, and Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president of India. Okay, now 1947. In between these, 1946 to 1949, we got independence also 1947, and then how did it get independence? We get independence by the Government of India Act of 1947, or we say the India Independence Act of 1947. That was passed by the British Parliament, and they, through this act only, they said that the India is now free and India is now on its own. So there were certain provisions of the 1947 Act. Let us see, and we will understand the nature of the Constituent Assembly before 1947 and after 1947. See. So in 1947, says that the India and Pakistan were created. Before in the cabinet mission, they did not wanted the India and Pakistan to be created. They wanted to be solidified, a unified India. But since there could not be any solution to that, so Government of India Act 1947, also known as the India's Independent Act of 1947, accepted that India and Pakistan will be there, and it ended the British rule. That is, the British supremacy over India ended, and the Constituent Assembly becomes sovereign. Okay, now what does this term mean? India and Pakistan Constituent Assembly got full power to make laws. How it becomes sovereign? What do you mean by it? That is, the abolished the office of Secretary of the State of the India. Princely state was free to join and no British control over the constitution. Each dominion was free to create its own constitution. British Parliament lost all rights to amend India or Pakistan law. This is what we call the sovereignty. Constituent Assembly becomes sovereign. See, 1947, 1946, Cabinet Mission 1946. What did it say? It said that you people of India, the British Parliament said you make a Constituent Assembly. Who said you to make the Constituent Assembly? It was the Britishers who told you to make a Constituent Assembly. What do you mean by this sovereignty? Sovereignty means you are not under the influence, you are not under the control of any other. You are governed by your people. You are responsible to your people only, no third party. But the Constituent Assembly was made on the order of the British Parliament, and the order was given in the Cabinet Mission Plan of 1946. So at that time, 1946, till the Government of India Act of 1947, the Constituent Assembly was not sovereign body. It was not sovereign body. Clearly, it was made on the instruction of the British Parliament. But as the Government of India Act of 1947 came, it made the Constituent Assembly sovereign. Means it said that the British control over the Indian Constitution Assembly is no longer valid. It is free to run in its own way. The British Parliament does not have any control. It will not give any instruction, or it will not amend any laws made by the Constituent Assembly. So after 1947, Government of India Act of 1947, the Constituent Assembly becomes sovereign. Okay, that is the difference you should understand. Also, now since I have already mentioned so many times that this is the first session, this is the last session. Why we say that this is the last session? Yes, the Constituent Assembly was framed. Why? Because at that time there was no structure to run the government. There was no structure for the different bodies to function. But when the Constituent Assembly finalizes the Constitution, and we know that on 26 November 1949 we adopted the Constitution. When the Constitution was adopted, it delineated, it elaborated, बहुत ही सारी चीजें डिटेल में बताई कि भाई ये एक स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से गवर्नमेंट रन करेगी, ये जुडिशरी होगा, ये एग्जीक्यूटिव होंगे, ये लेजिस्लेटिव होंगे.
तो जब आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, एक कंप्लीट पार्लियामेंट का आपके पास बेस है, एक स्टेट की असेंबलीज का बेस है, सो आपको ये बता दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि लॉज विल मेड बाय द पार्लियामेंट फॉर द सेंटर, लॉज विल बी मेड बाय द स्टेट फॉर द स्टेट administration. So why do you require a constituent assembly? So obviously it has to be dissolved. The entire purpose that was behind the creation of the Constituent Assembly was to make the Constitution of the India. And by that time, till the Constitution of India is made, till the election is held, there need to be laws of very important nature that need to be passed. So there need to be some laws that need to be passed, and for that you need some body, and for that the Constituent Assembly was made. So the Constituent Assembly was made temporarily, first to legislate on the important topic, second to frame the constitution of it. Okay, so once the objective, the motive behind it is completed, you no longer require the Constituent Assembly, and that is why the last session held on 26 November 1949. Now, obviously, the Constituent Assembly will have to function in two manner. One, as an administrator, as an executive. Another, as a legislative, to frame the laws, to pass the law. So whenever the Constituent Assembly met as met as the Constituent Assembly, it was headed by Dr. Rajendra Prasad. Okay. And when it met as a legislative body to make laws, it was headed by GB Mavalankar. Basically, he presided as a speaker whenever the Constituent Assembly was framing some law. So let us understand there were some laws that were made by the Constituent Assembly. Some of them was, you can write, abolition of the Privy Council. You can mention this in mains, Privy Council Act of 1947. Then there was the Provincial Constitution Order 1947, adaptation of existing laws of order of 1947. Also, let us understand some factual data with respect to the Constituent Assembly, such as such as the seal, such as the seal of the Constituent Assembly was the elephant. Who was not the member? Gandhi, the most famous personality behind Indian National Congress, was not the member of the Constituent Assembly. Advisor of the advisory role was played by B.N. Rao. You may get this name in the prelims of state examination, so you need to remember. Secretary was Secretary was H.V.R. Iyengar. Okay. Seal was the elephant was chosen as the seal. Gandhi was not the member. Advisor role was played by B.N. Rao, and secretary was Mr. H.V.R. Iyengar. Also, we have already understand that 11th session was held for 114 days in total. So this is all with respect to the Constituent Assembly. And in the next video lecture, we will be discussing that within the Constituent Assembly, a group of people were elected for framing the Constitution, as it was one of the major objective of the Constituent Assembly. And those people framed the Constitution. So, in the next video, probably we'll be discussing about the Constitution, the feature of it, the overview of the Constitution, and the different parts and the members and the nature of the Constitution. So, this is all with this video. I hope you enjoyed the video. If you have enjoyed it, do not forget to give us a thumbs up and also subscribe to our channel and comment if you have any doubt on it. Also, we will be sharing very soon the WhatsApp communities link to the video so that you may remain connected to us 24 cross 7 and
We will appreciate raising your doubts and we'll be happy to answer that. Thank you.